अलैकुम। पहले मैं खुशखबरी की बात सुनाना चाहता हूँ आपको कि एमसीसी इंशाल्लाह फरवरी में टूर करेंगे पाकिस्तान में, लाहौर में। तो हम उनसे बात कर रहे थे. We were speaking to them comprehensively over the last 2 or 3 months, and I'm delighted that they've confirmed 50 साल के बाद वो पाकिस्तान में आ रहे हैं. वो लाहौर का टूर होगा और Kumar Sangakkara will captain the team. It's very significant, very important Pakistan ke liye. MCC, very prestigious club, everybody's aware, based at Lords. So हमारे लिए it's a major coup that a high-profile team will come. January में इंशाल्लाह हम itinerary announce करेंगे और team भी उनकी announce करेंगे, उनकी squad जो है. दूसरी चीज़ ये है कि delighted to be here at the National Stadium in Karachi. It was the venue for the previous fully completed test match against Sri Lanka, जिनमें Yunus Khan, the Pakistan legend, scored a 100. So हमारे लिए ये बहुत significant है. Karachi, we know, is a hugely passionate city for cricket. सब कराचीइट्स को urge हम करते हैं कि वो आएँ support करने के लिए. It's a very, very important test match for us. With the last test match rained off, it takes us into this last test match now with everything hanging on in the balance in terms of the series. So hopefully everybody will come and support. But देखिए ये series जो हम खेल रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ, it couldn't happen without the support of all of the stakeholders. आप भी बहुत important stakeholders भी हैं. All your positive reporting in the newspapers about the security and safety in Pakistan has helped bring Sri Lanka here. It's great to see the whole nation uniting for cricket and bringing everybody here. You know, you'll have your differences and you'll have your opinions about the PCB, but एक चीज़ है जो हम पूरे मुल्क united हैं, and that's united on bringing cricket back to Pakistan. And inshallah, this is the start of many things to come for us as well. Apart from the MCC, we've obviously we've been speaking to South Africa about coming to play 3 T20s in Pakistan. मार्च के आखिर में हम उनसे बात करें कि वो touring उस वक्त करें. The board have signed it off of South Africa. We're just waiting now for the players to confirm that they are happy. They've had some changes in their leadership. The CEO is no longer the CEO, so they've got a new CEO in place. But inshallah, we'll have some good news on that in the next few weeks. So that'll be something else for us to report. HPL PSL के हमने draft भी किया. You've seen all the draft. We've got over 50 players from overseas who are going to be taking part in the HPL PSL. 4 venue हमारे मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में हम खेलेंगे. The venues will be ready. We've worked very hard to get all of these venues ready, and inshallah we'll be ready to take on the challenge of that. Obviously, I've been to Australia recently. There's been a lot of talk about my visit to Australia, but I thought it'd be a good opportunity for me to update you on some of the things that were achieved in Australia. And I'm very, very pleased and very happy with some of the things that were achieved in Australia. पहली चीज़ ये है कि Australia 2022 में आ रहे हैं खेलने के लिए, which is part of the Future Tours program. They were due to play 2 test matches and 3 T20s. We've agreed that Australia will play 3 test matches when they come in 2022. देखिए हमारे लिए T20 content जो है, it's very important that we play more test cricket. Red ball cricket for us is very, very important. So there'll be 3 test matches. We've also agreed in principle, and the intent is there with Cricket Australia and ourselves, that between 2023 and 2031, all the test series that we play against Australia will be 3 test matches. And we play more often. So at the moment, every 3 or 4 years, Australia के खिलाफ हम खेलते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि we play more often against Australia, good opposition, on a home and away basis. The other thing that I discussed with Cricket Australia is around A tours. So our Pakistan A team, the Shaheens as they will be called moving forward, we are looking at a reciprocal arrangement where our team goes and plays in Australia and Australia come here and play. So before 2022, we are hoping that they will send an A tour
to Pakistan, and that's what we're working for. I'm looking at a 4-year cycle of 8 tours with Australia, New Zealand, South Africa and England. I think that हम बांग्लादेश भी जाते हैं, श्रीलंका भी हम जाते हैं, लेकिन we don't play the other big nations very much. So in terms of getting our players ready for the conditions that they face across the world, it's important we expose our guys, our under-19s and our A-teams to those things. दूसरी चीज़ ये तीसरी चीज़ ये है कि न्यू साउथ वेल्स से भी बात मैंने की है about a scholarship program to get some of our best boys and girls, give them the opportunity to go train in Sydney, play club cricket, practice at the Sydney Cricket Ground, at the High Performance Centre. I visited the Brisbane High Performance Centre, and it's certainly something that we should be aiming to emulate, and that should be our vision and our goal of what a high performance centre should look like. So इस चीज़ में, it's been very worthwhile going to do this and going to see them and speak to them. क्योंकि देखिए ये बातें जो progress हम कर रहे हैं, and I'm very proud of the progress we've made. Let's not forget that we planned and implemented a new domestic structure in 7 months. And we had Cricket Australia visit, we had the ECB visiting, Cricket Ireland visiting. All of these things happen because of relationships. They happen because of, we are now as Pakistan Cricket, we're building our credibility around the world. People don't just come and just agree to things. You have to sit in front of them, you have to have dialogue, discussions, debates, and try and make things happen. So these are some of the areas which obviously we've delivered on. Domestic cricket ki, obviously with the delivery of the new structure, I'm delighted to see after 11 years first class cricket returning to the Bukhti Stadium in Quetta. 4 games उन्हें खेले हैं, of which 2 were live streamed. We live streamed 10 of our matches out of 30 during this summer. We're going to increase the number of games that we live stream. We're going to look at how we improve wickets. We've got Andy Atkinson, ICC pitch consultant, वो जनवरी के 3 तारीख वो आ रहा है पाकिस्तान में. And he's going to come and assess all of our wickets. He's going to run workshops for all of our groundsmen, and he's going to help us develop that. And Andy will keep visiting over the course of the next 6 to 8 months to help us develop our wickets. It's something that, along with the officials, umpiring, workshops that we run, it's very, very important that we have all of these things in place. We've spent 3.6 billion rupees on our domestic structure over the last 3 years. Significant investment. लेकिन ये sustainability वाली बात भी है हमारे लिए पाकिस्तान cricket के लिए. We can't sustain that over a long period of time. So we're active conversations now with sponsors. Inshallah, in the next 2 or 3 months, we will be announcing sponsors for the various cricket associations that we have, which will allow us to spend some of that money in other places. There's a lot of plans we have in terms of developing the National Cricket Centre that we have, the NCA, the Academy. And, these are the things that, we have to be investing in. Grassroots, schools cricket, club cricket. This money that we save from spending on the domestic structure, part of it we can use to invest in grassroots cricket. So that for us is very, very important. But Cricket Committee, finally, before I open up to questions, you saw recently that I stood down as the chair of the Cricket Committee. Despite a lot of frantic phone calls from a lot of people, I hadn't resigned as the CEO of the PCB, which some people thought I had done. But I think it was always intended when Mohsin Khan Saab stood down in the summer that I would do that in an interim period. It's not an ideal structure where your chief executive is also your chairman of your cricket committee. But it was a need for a time being, and I fulfilled that. I spoke to Mani Saab about standing down, which I did do, which I thought was the right thing to do. I will remain on that cricket committee. It remains an advisory board to the board, advisory committee to the board, and it will continue to operate. We're currently looking at 2 or 3 members to including a new chairman, an independent chairman, an ex-cricketer. I can't go into any names at the moment, but conversations are taking place. We want to revamp that cricket committee. We want to have our next meeting before the Bangladesh series, and then we can plan a whole calendar year where we meet 4 times in a year. And this is going to be ongoing. Wasim Akram will stay on the committee. He's a very, very important
person for us with his knowledge, experience and expertise. Aruj Mumtaz will remain on there as our women's representative, and then we'll be looking at other representatives. Currently, we probably have too many people from PCB on there within that group. That will change, and we will revamp it, and it will be ready for January, inshallah. So that's just some updates from me. I guess in summary, the domestic structure, development, implementation, international cricket now returning, the whole of the HBL, PSL now in Pakistan, and dialogue now opening about A tours and playing 3 test matches and various other things, I think is significant progress over the last 8 or 9 months. And that's something that I think we as the PCB should be proud of, and we should be proud of that as a nation. So with that, I'm very happy to open up for questions. वसीम साहब, ये तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं जो आप ले रहे हैं, लेकिन जो आम एक पाकिस्तानी है वो चाहता है कि पाकिस्तान टीम कहाँ स्टैंड करे। इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है बहुत दरमियान में है, ना अपर टियर में ना लोअर टियर में। जब सरफराज को आपने कुछ हफ्ते पहले हटाया तो पीसीबी की जो फिलॉसफी आई कि सरफराज T20 की परफॉर्मेंस पे आपने तीनों फॉर्मेट से उसको बाहर कर दिया। अब रिसेंट परफॉर्मेंस जो अजहर अली की है, दुनिया की जो सबसे बड़ी वेबसाइट है आज, उसमें भी बहुत डिटेल एक आर्टिकल है अजहर अली की इंडिविजुअल बैटिंग परफॉर्मेंस पर, उसकी जो पिछले 6 टेस्ट मैच की और 12 टेस्ट इनिंग्स की परफॉर्मेंस है। तो जिस तरह अजहर अली परफॉर्म कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता इस टेस्ट में अजहर अली फेल होते हैं तो जो फिलॉसफी आप सरफराज के लिए लेकर आए, तो क्या हम ये समझें कि ये टेस्ट मैच जो है ये मेक एंड ब्रेक है अजहर अली के लिए, कि अगर अजहर अली यहाँ परफॉर्म नहीं करते तो फिर लीडरशिप में हम यहाँ भी चेंज देखेंगे? टेस्ट टीम की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, टेस्ट टीम की बात जो है, एक कोच की विजन होती है in terms of which players he wants to select, what his philosophy is around selection and which players he would like involved. देखिए, सरफराज ने significant इसने contribution की है. This won't be the last time we see Sarfaraz. He's a good man. He's got himself fit, and he will perform and he will knock on the door again to play for Pakistan. लेकिन ये अजहर अली के बात जो आप कर रहे हैं, कि देखिए, अजहर has just returned. Well, I started as captain a very short while ago. It was a tough initiation in Australia. आपने देखा न्यूजीलैंड की क्या हालत हुई है उधर ऑस्ट्रेलिया में. It's a hard place to go and win. Very, very hard. His performances, I have no doubt, will pick up. Lekin to say that this is his make or break, I think is a bit premature. Wasim, it's nice to hear that you are on a cricket revival spree. When do you expect first contact with India? Because it's always the hot topic in international cricket. देखिए, इंडिया की बात हर वक्त आती है, लेकिन फ़िलहाल तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी गवर्नमेंट डिसीजन बनाती है. So all we can do is keep dialogue open with the BCCI, but ultimately they have to gain permission before they play. So our focus is on the teams we can play and what we know which is ahead of us. But you never lose hope, and we hope inshallah one day we'll be able to play India again, whether it's on a neutral venue or in Pakistan, because this is what everybody wants to see. But at the moment it's out of our control, so we're focusing on the things we can control. मेरे आपसे 2 सवाल हैं. एक तो इंग्लैंड में 18 काउंटीज हैं, उनमें से एक लेस्टरशायर, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव होना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ की पॉलिटिक्स अलग है. आप पाकिस्तान आए हैं तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. कितना डिफिकल्ट है, ये पहला सवाल. और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि सुनने में आया है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी को ठेके पे दिया जा रहा है, आउटसोर्स किया जा रहा है. अली जिया के हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो रही है. I asked it from your chairman Ehsan Mani at Rawalpindi. He said that investigation is going on. अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो फिर उसका रिजाइन क्यों एक्सेप्ट किया आप लोगों ने? और मुदस्सर नजर भी उसी कॉन्टेक्स्ट में he is not interested to renew his contract, जो आप लोगों ने 6 महीने पहले ही प्रेस रिलीज इशू कर दिया. प्लीज मेरे दोनों सवालों के जवाब. हाँ, देखिए, पॉलिटिक्स वाली जो आप बात कर रहे हैं, I'm very aware of the politics in Pakistan cricket. I think that 3 महीने पहले जो मैंने काम ये शुरू किया पाकिस्तान में, लोग मुझे बता रहे थे that look, it's not going to be easy. I understand. I came in as a British Pakistani. It's not been easy in terms of the media. But देखिए, एक चीज़ है कि in my heart, I'm here because of Pakistan cricket. And I've come here to contribute to Pakistan cricket.
And आपने सुना है ये last 7-8 months, we've managed to get things done. So for me, whatever the media, whatever views they have, it's that everybody's entitled to their opinion. You're entitled to your opinion. You've made your opinions known quite openly. Absolutely fine. I respect you for that. It's not a problem. But you know, it's not an issue around that. I've managed to navigate myself, and I'll continue to do that. I'm focused on the job. दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं वो National Cricket Academy के वो बात पूछ रहे हैं. हाँ, I can't speak too much about the ongoing investigation to start with. ठीक है, उसने resign की है. लेकिन what was going to come first was there was going to be a suspension, which was going to be followed by an investigation. He decided to resign, which does not mean that investigation isn't going to continue. So investigation वो होगा, वो अभी हम कर रहे हैं, and then we'll continue to do that. देखिए मुदस्सर की बात आप पूछ रहे हैं कि last year जब मैं start किया था, in last February I started. Mudassir made it clear that he probably only wanted to do one more year. So the chairman, for continuity, wanted him to continue. Mudassir was happy to continue for a year. But here with what's happened recently with Ali Zia, I think Mudassir just wanted to make his position clear because time to lag jata hai in terms of finding a recruitment, finding a replacement. So he didn't, you know, he wanted to make sure there was no speculation about anything else. He made his position clear 6 months early, so we can start to recruit and we could start to plan, and there was nothing more than that. आउटसोर्स कर रहे हैं आप लोग नेशनल क्रिकेट नहीं, outsource की I don't understand क्या बात कर रहे हैं आप? खबर आई है कि ठेके पे दिए जा रहे हैं नेशनल क्रिकेट. नहीं, बिल्कुल नहीं. I can guarantee you, ऐसे कोई बात नहीं. मेरे सवाल आपसे PSL के बारे में. जी जी. तो ये PSL के जो प्रोजेक्ट हेड है, उनका तकरीर कब तक होगा? और जो ये फीस वगैरह जो फ्रेंचाइज नहीं दे रहे, कई सारी नहीं, इसकी वजह क्या यही है कि जो अकाउंट से अब तक फाइनली हो सके 10 महीने में? देखिए एक चीज़ वो PSL की एग्जीक्यूटिव की बात आप कर रहे हैं. In the next 2-3 days we'll be announcing firmly who that be. दूसरी चीज़ वो फ़ीस तो देखिए हमारी रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ, it's actually a very positive one. They would not agree on everything, and we don't agree on everything, but like, that's part and parcel of it. But the fees, in terms of all of that, we're pretty much there now, in terms of what we need to provide them. We were still waiting for 1 or 2 outstanding payments to us to reveal the revenue share for the PSL owners, for the franchise owners. Like, and we're nearly there now. And inshallah, process jo humne ki hai is something we need to learn from, because we need to be better and we need to be quicker moving forward. Because this year hasn't been acceptable. We've been too slow in providing details around revenue shares to the franchise owners. They are very big investors in the game in Pakistan. We respect them and we're thankful that they're involved in Pakistan cricket. But both sides, I think we need to be better, and that's something we're talking to each other about. Wasim, it's really impressive to see that we're having professionals now for everything, almost. You're calling it Andy for pitches. But do you think our setup desperately needs a psychologist that can work with our young cricketers and with the national team as well? Definitely. I think if you look at every international sports team now, we haven't had a psychologist who's worked with our players. देखिए pressure वाली बात होती है. And one thing that's always been labelled in our environment is once the pressure starts, our guys can't cope with it. We know we've got talented cricketers, but like in modern sport, support चाहिए आपको. You know, you need a psychologist working. It's something that we're talking about, and we will bring somebody in to support the guys. 6 हमारे cricket associations जो हैं वो 6 high performance centres भी हम develop कर रहे हैं. Sitting under those high performance centres will be psychologists working with the young players coming through on the A tours, on the under 19s, under 16s as well. So I think the days of not working, having psychologists involved, thinking talent is good enough for Pakistani players, I think those days are gone. आपको लगता है कि जो तजुर्बा एक ही शख्स को 2 ओहदे का मतलब साइमल्टेनियस रिस्पांसिबिलिटी में बावजूद दी थी हेड कोच और चीफ सेलेक्टर की, ये आप अब तक से सैटिस्फाइड है या आगे जाके इसको रिव्यू करने का कोई इरादा है? देखिए लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा था कि नदीम खान भी उनके साथ बैठे थे. And it wasn't just a show thing for him to sit there. The reason why Nadeem is there is that हमारे 6 head coaches जो हैं वो selectors work very closely with Nadeem. And Nadeem is the coordinator who sits in the middle. When we announced Misbah taking on this dual role, I said at the time, and it was documented, that we'll bring whatever support in to help him and to support him in this particular role.
So Nadeem is working very closely with Misbah, and he's working very closely with the 6 head coaches to take a lot of the burden off him. You know, the majority of the burden now sits with Nadeem, and he provides information. Tomorrow morning, very early tomorrow morning, the 6 selectors, Nadeem and Misbah, are actually meeting to have a discussion around moving forward, identification of players, हमारा system कैसे चल रहा है, is it working efficiently, what can we be doing better. So these are the number of things that we're all looking at. अभी आपने मेंशन किया क्रिकेट कमेटी के हवाले से, आपने कहा कि बांग्लादेश की टीम से पहले जो कमेटी का इजलास होगा, जहाँ तक मेरी इतलात हैं सैटरडे को आप लोग मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं क्रिकेट कमेटी की, तो उसके हवाले से क्या आपका एजेंडा है? और दूसरा एक वसीम से बातचीत हुई है तो किस हद तक वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है एज ए चेयरमैन? देखिए एक चीज़, वसीम won't be chairman. तो वसीम अकरम की बात कर रहे हैं. No, he won't be chairman. So Wasim's value is in being able to free as a spirit. दूसरी चीज़, ये मीटिंग आपकी सैटरडे की कह रहे हैं? नहीं, there's no meeting on Saturday. वसीम साहब, बैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी, आपका ये एक तारीखी मतलब दिन शुरू होगा कल से, इसलिए कि श्रीलंका की टीम जो है 10 साल के बाद यहाँ टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, तो एक तो कराची के शहरियों के लिए आपका पैगाम क्या होगा, और आप सेटिस्फाइड हैं कि कराची के जो शायकीन है क्रिकेट के, उनको स्टेडियम लाने के लिए आपने सही तशरीह दी है? देखिए हमारी मार्केटिंग टीम काम तो बहुत की है. Karachi supporters are very passionate, very knowledgeable supporters. So हम पूरी कोशिश की है in terms of how we're going to get people to the ground. Tickets are very cheap. We want people to come and watch. ये पैसे वाली बात नहीं है पाकिस्तान PCB के लिए. This is about getting the grounds full. आपने पिंडी में भी देखा, इंतज़ाम अच्छे से इंतज़ाम हमने पिंडी में भी किया था. With supporters came, we had a full houses on the days we played. So it was very important. So हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो कराची आइट्स जो हैं वो आएंगे देखने के लिए. दो सवाल पूछना चाहूँगा. सबसे पहले तो ये क्या वेरिएंट्स हैं, दो चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था सर तरीके के. हम एक्सपेक्ट ये करें कि एमसीसी के बाद बहुत सारी काउंटीज़ के प्री सीजन कैंप्स होते हैं, दूसरे मुल्कों में काउंटीज़ जाती हैं, कि काउंटीज़ जो हैं वो आने वाले अरसे में पाकिस्तान भी आएंगी और यहाँ भी उनके प्री सीजन कैंप्स होंगे, मैचेस होंगे. और दूसरा ये कि हमारे बहुत सारे हाई परफॉर्मेंस कैंप्स लगते हैं. आप न्यू साउथ वेल्स की तो बात कर रहे हैं, इंग्लैंड का भी एक कल्चर है कि विंटर कैंप्स में स्पिनर श्रीलंका जाते हैं, फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका जाते हैं. तो पाकिस्तान भी अपने बेस्ट टैलेंट को मुख्तलिफ कैंप्स के लिए न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि हर मुल्क भेजे जहाँ जहाँ की जैसे स्पिनिंग क्वालिटी है श्रीलंका के अंदर, ताकि हमें ये भी बड़ा फ़ायदा हो. बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. हम इसलिए ऑस्ट्रेलिया से भी बात की है, इंग्लैंड से भी हम बात कर रहे हैं, और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से भी हम बात करेंगे अराउंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स. आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो यंगस्टर्स को अर्ली एक्सपोजर भी मिले उनको. लेस्टरशायर से मैंने बात की है और दूसरे भी 1-2 काउंटी से मैंने बात की है अराउंड प्री सीजन ट्रेनिंग. हमारे फैसिलिटीज़ भी अच्छे हैं NCA में, और लाहौर में, और कराची में, पिंडी में. सो ये आहिस्ता आहिस्ता से हो जाएगा. MCC टूर जो हो रहा है फरवरी में, it's going to bring a lot of kudos, a lot of credibility to Pakistan. Kumar Sangakkara जो आ रहा है, it's going to be very good for the country. इसके बाद पूरी उम्मीद है कि लोग काउंटीज़ भी आएंगे, दूसरी टीम्स भी दूसरे मुल्कों से भी आएंगे. And this is something we have to build on. एक चीज़, you can't do everything at once. Small steps हम ले रहे हैं, और inshallah I will keep growing with that. खान साहब, अभी आपने बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पैसा जो है वो क्रिकेट पर पानी की तरह बहा रहा है, वो तो आप पर भी बहाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों पर भी बहाया जा रहा है. पुराने जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब नए लोग जो है उनको आप भर्ती करेंगे. ग्रास रूट लेवल की आपने बात की, ग्रास रूट लेवल हमें नज़र कहीं नहीं आया कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट आपने किया, वो इतना कामयाब नहीं हुआ. अभी आपकी जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, जीरो जा रही है. तो क्रिकेट में पैसा तो आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पानी की तरफ बहा रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो हो रही है. तो इस पर भी सोच विचार करेंगे या सबको सुहाने ख्वाब ही दिखाते रहेंगे? देखिए पहली चीज़ ये है, 3.6 बिलियन हमने स्पेंड किए डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर. तो हम पहले साल हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. अब प्लेयर से पूछें क्वालिटी की बात, वो आप कर रहे हैं. देखिए वो टाइम लग जाएगा, 2-3 साल लग जाएंगे. हम कुकर बॉल भी हमने चेंज की है, हर सिस्टम हमने चेंज किया है. सो कंपटीशन हम क्रिएट कर रहे हैं एंड वी मूविंग फॉरवर्ड विद इट. इट्स गोना टेक टाइम. एक साल में नहीं हो सकता. हमारा दूसरा स्ट्रक्चर जो था, इट वाज देयर फॉर मैनी ईयर्स एंड इट फेल्ड अस. क्योंकि देखिए हम नंबर 7th टेस्ट क्रिकेट में, 6th में
ODIs में हम अभी बैठ रहे हैं, 3 महीने में की बात नहीं है. This has happened over a number of years. Slowly जो हम slide inconsistency, हमारा सिस्टम नहीं ठीक, तो हम सिस्टम आपने ठीक किया, तो we are now moving in the right direction. वो टाइम लग जाएगा. वो दूसरी बात जो आप स्टाफ की बात कर रहे हैं, देखिए, there comes a time for people to move on. Okay, हमारे जो PCB है, it's fresh ideas, fresh time. There's going to be changes. अभी आगे भी changes होंगे, तो टाइम लग जाएगा. ये 6 क्रिकेट एसोसिएशन जो हमने डेवलप की है, उनका ये भी काम होगा to actually deliver schools, deliver clubs. PCB is the only organization in the world, cricket organization, जो हर चीज़ deliver करता है. So it delivers grassroots cricket, clubs के भी ये भी हम कर रहे थे, ground infrastructure के भी expenditure PCB खर्चा ये कर रहे था. So all of these things, it doesn't happen in any other country. हम decentralize कर रहे हैं. इसलिए sponsorship की भी मैं बात कर रहा था. Is the next 2-3 months we'll be announcing new sponsors, so we can start to work with them about grassroots cricket. खान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में एक अदालत का एक ऐसा फैसला आया हुआ है कि बाज़ क्रिकेटर जब बोर्ड में आते हैं, जैसे वसीम अकरम है और दीगर क्रिकेटर्स हैं, तो उनके हवाले से उस फैसले को बार बार दोहराया जाता है. तो क्यों ना अच्छा हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर एक अपना क्लियर कोई स्टांस ले ले, क्योंकि वो भी हमारे स्टार्स हैं, और जब वो बोर्ड में आते हैं तो एक ये तबसरा होता है कि इनके हवाले से ये रिमार्क्स हैं अदालत में. दूसरी बात ये है कि पॉलिटिशियन हमेशा जब भी टीम आती है स्टेटमेंट देते हैं, मगर आपके टाइम पर जो रूलिंग पार्टी के जो बड़े नाम हैं, शायद वो अली दैती हो गए, नईमुल हक हो गए या फैसल जावेद खान हो गए, ये बहुत करीब हैं प्राइम मिनिस्टर से, वो इतने सख्त बयान देते हैं आपके खिलाफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ. तो आप नहीं समझते कि इस पर एटलीस्ट रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, कि मैसेज जब गवर्नमेंट मिनिस्टर इस तरह की बात करते हैं तो कुछ और ही जा रहा होता है दुनिया में. देखिए, वो जो कमेंट्स जो देते हैं, वो you can't stop people making comments. देखिए, जो जितने आप फ्रेमवर्क आप उनको दें, उनको बाइंडिंग कर दें, उनको ये बात नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. देखिए, ये फ्री स्पीच का मुल्क है. अब जो कुछ आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं. सो यू कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम हैविंग एन ओपिनियन. तो जो नहीं मुल्क को दूसरी जगह बातें आप कर रहे हैं, वो करेंगे. पीपल विल टॉक. देखिए, पीपल आर पैशनेट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट. PCB ऐसी इंस्टीट्यूशन है, इट्स नेवर गॉट एवरीथिंग राइट इन द पास्ट. सो लोग कंप्लेन करते हैं, ये ऐसे हो रहा है, वो यू नो ऐसे हो रहा है, तो चीज़ें ये हो रही हैं PCB में, दिस इज़ इन राइट, दैट इज़ नॉट राइट. व्हेन यू एट द टॉप ऑफ एनीथिंग, यू देयर टू बी शॉट डाउन. तो ऐसी जो बात है, आई डोंट, जो पीपल की ओपिनियंस जो होती है ना, आई रिस्पेक्ट पीपल बिकॉज दे हैव ओपिनियंस. Whether it's good or bad, it's their opinions, but important thing for me is that we stay focused on Pakistan cricket. जो मैंने चीज़ें highlight की हैं आपको in the last 8 or 9 months is progress. Progress हम बना रहे हैं. Whether people want to debate it, discuss it, agree, disagree, you can't lose the fact we've developed a domestic structure in 7 months. Test cricket भी वापस आ गए. 3 test matches के हम बात कर रहे हैं. We're looking at exchange programs. Whole of the PSL is going to be HBL, PSL will be in Pakistan. ये पाकिस्तान के लिए progress है. 2-3 साल में इंशाल्लाह if we keep moving like this, it's going to get better. हाँ, देखिए, वो Wasim, nothing's been proved against Wasim. Wasim remains an important legend in the game in Pakistan, as does Yunus Khan, as does Misbah-ul Haq, as does Waqar Yunus. These guys are icons. पूरे मुल्कों में आप जाएं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड में, सब इनकी बातें करते हैं in terms of what these guys have achieved. Legends in the game, and I think we should continue to respect them. वसीम खान साहब, ये टीम श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद लाहौर जाती है, T20 सीरीज वो हार जाते हैं, प्री प्लान उमर अकमल और अहमद शहजाद को खिलाया जाता है, टीम अंडर प्रेशर आती है, सारा नजला गिरता है सरफराज पे कि जी आपकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है, लिहाजा आप घर चले जाएं. सवाल हुआ अजहर अली के परफॉर्मेंस पे, तो आपने कहा कि कोच की मर्जी भी देखनी पड़ती है. तो सरफराज के लिए जो पॉलिसी थी, उसका मतलब वो अजहर के लिए नहीं है. तो फैसले कौन करता है, कोच कर रहा है या बोर्ड? देखिए, Azhar, how long has Azhar been in post as captain? 2-3 महीने हो गए.
2-3 महीने है ना. So is it fair that you judge him on 2 or 3 months? देखिए time दे दो उसको. Give him time as you want to give the coaches, as I wanted time when I first started the job. आप काम शुरू करें, आपको time तो चाहिए in order to do something. फिर साल के बाद मिसबा भी कह रहा था 1 साल के बाद मुझे जज करें. Give me time, give the team time. Decisions जो उसने बनाए in terms of selection, मिसबा के it's up to him, because ultimately accountability एक बंदे की होती है. This is the reason why we gave the chief selector also the head coach's role. So you have accountability for one person. Give him time. साल तो बाद judge करें in terms of whether he's been successful or not. Ultimately देखें वो T20 performance की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. You know, it's not good enough. It's not acceptable for us that we're losing matches. Australia was difficult tour, but we lost by an innings in both matches. Not acceptable. So ये ना समझे कि हम बिल्कुल I'm blind है इस चीज़ में. We're measuring these things. We're looking at these things. But बस मैं यही कह रहा हूँ आपको कि इसको साल दें. Let him operate for a year, and then we'll see where we are after that. सर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो चेंज किया गया जिसमें मैंने देखा 6 टीम्स आई, क्वालिटी पे तवज्जो दी गई है, तो अब ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है जो कहा जा रहा था डिपार्टमेंट सपोर्ट करेंगे रीजन्स को, तो इसका क्या अब तक अपडेट है? क्योंकि पहला फाइनल ट्रॉफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, फाइनल रह गया है, इसको हम कब तक देखेंगे कि डिपार्टमेंट जो है वो सपोर्ट करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, कहाँ तक ये प्रोसेस पहुँचा है? देखिए 2 चीज़ें हैं डिपार्टमेंट्स की. एक चीज़ है कि डिपार्टमेंट्स के हम उनसे अभी बात कर रहे हैं अबाउट कंटिन्यू टू कीप अ कंपटीशन गोइंग फॉर द डिपार्टमेंट्स. सो हम विंडो फाइंड करेंगे मे बी फॉर 2 or 3 weeks where they can play a department competition, for example. That's one thing. दूसरी चीज़ है जब बातें हुई हैं with all the departments, they've been very, very positive about supporting and sponsoring. There'll be a number of departments who will be involved moving forward. 2-3 महीने लग जाएंगे, इंशाल्लाह we'll be in a position to announce that. वसीम भाई, आपने तमाम टीमों की बात की, अभी एमसीसी की भी, ऑस्ट्रेलिया की भी, बांग्लादेश को आना है श्रीलंका के बाद, उसके हवाले से क्या अपडेट है? और अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती तो फिर प्लान बी क्या है उसका? देखिए बांग्लादेश के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस तो हुई है हमारे. Bangladesh at the moment are happy to play T20s in Pakistan, but they're slightly reluctant to play Test cricket, 2 Test matches in Pakistan. I've written to Bangladesh, been very, very strong in my response, and asked them for the reasons why. Because देखिए ICC वाले officials, ICC हमारी security plan को sign off कर दिया. So that's been signed off and has been signed off for a while. Sri Lanka have going to complete 2 Test matches here. Very safely, mashallah, everything has gone well. You know, all the security provisions are in place. So हम Bangladesh से ये सवाल पूछ रहे हैं कि what is the reasons for you not wanting to come? It's not finished. It doesn't mean they're not going to come. 3 T20s की बात वो कर रहे हैं, but लेकिन for us playing Test cricket in another country is not an option now. वसीम, आपने अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट पॉलिटिक्स का तस्करा किया, तो ये पॉलिटिक्स से आप किस हद तक निपट चुके हैं और आपको अपने प्लान एग्जीक्यूट करने में कितनी ये आड़े आई है? देखिए हम प्लान तो एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं. वन थिंग, इंग्लिश मीडिया भी बहुत स्ट्रांग है इंग्लैंड में भी. ये मतलब तो नहीं है कि बस पाकिस्तान की मीडिया में पॉलिटिक्स होती है ये तो वो, और पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, इट हैपन्स एवरीवेयर. सो ये वो 5-6 चीज़ें जो मैं हाईलाइट कर रहा था आपको, दीज आर थिंग्स दैट बीन डन. So if politics was weighing me down, I probably would have gone back to England 5 months ago. So yeah. So, you know, for me it doesn't matter. मैं focused हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ. जो मैंने पहले कहा आपको is that, you know, I've come here because I genuinely want to help Pakistan cricket move forward. I'm not going to get everything right. गलतियाँ भी होंगी, I'll do things right. I'm not going to get everything right. There's going to be mistakes I make. That's fine. You know, I've got no qualms about that. I'll take it on the chin and I'll move forward. वसीम साहब, मेरा सवाल है कि जो लेटेस्ट करप्शन का स्कैंडल आया है विराट कोहली कतर T20 लीग में, सुनने में ये आ रहा है कि अगेन कोई फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर है जिसके इर्द गिर्द घूम रही है इन्वेस्टिगेशन. तो ICC ACU ने आपको कुछ कम्युनिकेट किया है इस हवाले से? नंबर 1. नंबर 2 ये कि हमारी पॉलिसी T10 क्रिकेट के हवाले से क्या है? कंफ्यूज लगता है क्योंकि अबू धाबी में आप नहीं जाने देते और फिर यहाँ आप भेज देते, तो व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड? पहले I'll start with your last question. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. हमारी NOC पॉलिसी जो है थोड़ी confused है. So this is something we are now reviewing and we're going to get this right. Because देखिए वो NOC वाली पॉलिसी जो है, we need to give players the opportunity to go and play abroad. Experience उनके लिए होनी चाहिए. It's only going to benefit Pakistan cricket.
particularly now where there's no domestic cricket being played. Finally, यहाँ हो रहा है on the 27th. But apart from that, there's no domestic cricket for a period of time. So players need to be given the opportunity. तो दूसरी चीज़ वो पहली सवाल जो आपने पूछा था कि around there's been some approaches documented in the media. हाँ देखिए हमारा एक player जो है he was approached and he informed the authorities immediately and informed us. That information is now being passed to the ICC. तो देखिए हम education programs जो हमारे हैं PCB के जो हम run कर रहे हैं, this is what we teach them. As soon as you're approached, you let somebody know and then it's escalated upwards. Where there's been instances the last 7-8 months where approaches have been made, players have immediately told the authorities, told us, we've escalated it, handed it over to the ICC. नहीं PCB को उनने inform किया हमारा security officer जो है, we have then informed the ICC, which is the process. वसीम प्रोग्रेस की आपने बात की तो जो नया क्रिकेट बोर्ड आता है वो कहता है कि अभी प्रोग्रेस हम देखेंगे लेकिन सच्चाई ये है कि आपने अब तक जितने डिसीजन लिए उनमें क्रिटिसाइज ज़्यादा हुआ है चाहे आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की चाहे आपने मिसबाउल हक को लगाया सरफराज को हटाया ये जो भी डिसीजन हुआ उस पर क्रिटिसाइज ज़्यादा हुआ कि भाई कप्तान T20 का नंबर 1 कैप्टन था वो कैसे टीम को नंबर 1 रखा होता है ठीक है आपकी प्रोग्रेस हम देखते हैं लेकिन सच्चाई आपने खुद क्रिकेट खेली है इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है या पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल दिखाई देता है हमें स्टार्स दिखाई नहीं दे रहे क्या आपके जहन में ये चीज़ भी आती है कि कुछ ग्रास रूट लेवल पे 12-13 साल के बच्चों के लिए कुछ कैंप्स लगाए जाए कुछ वहाँ से टैलेंट सर्च किया जाए कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं आप भाई हमने पहले भी ये जवाब दिया इस बात के वो पूछ रहे डोमेस्टिक वो ग्रास रूट्स का सवाल पूछा एंड एग्जैक्टली द सेम जो 6 हमारे क्रिकेट एसोसिएशंस हैं उनको हम डेवलप करेंगे स्कूल्स क्लब्स क्रिकेट जो हैं वो रन करेंगे ऐसे होना चाहिए और दूसरी चीज़ हाँ ठीक है मैंने पहले भी ये बात की है नॉट एवरीथिंग विल बी राइट इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस आई मेक लेकिन जब हर स्टेप हम आगे जाते हैं हाफ अ स्टेप तो वापस हम आएंगे बिकॉज समथिंग इज़ इन राइट वी हैव मेड द राइट डिसीजंस व्हाटएवर बट गॉट टू बैक द डिसीजंस वी मेक हम सोच समझ कर हम डिसीजन बनाते हैं एवरीथिंग डजंट वर्क आउट राइट बट एज आई सेड मिसबा को 1 साल के बाद आप जज करें और बाकी चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं ये तो प्रोग्रेस है It wasn't happening before, it's now happening. वसीम आप बात कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म की और आप बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनल अंदाज में क्रिकेट बोर्ड को चलाना है समीउल हसन वर्नी साहब आपके साथ मौजूद हैं ये भी प्रूफ प्रोफेशनल है लेकिन आपने पाकिस्तान के कैप्टन हैं ये जो स्पॉन्सर के बोर्ड के सामने इस वक्त आप बैठे हैं अच्छा होता है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड है क्योंकि समीउल हसन वर्नी साहब जो ICC में भी काम कर चुके हैं तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव के हैसियत से बैठे हैं अच्छा होता है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस पैनाफ्लेक्स के सामने बैठते हैं और कंफ्यूज होने की आप बात कर रहे हैं ऑन द अदर साइड कंफ्यूज तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल इस वक्त वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में आपने कहा कि 17 मिलियन की आबादी है ऑस्ट्रेलिया की 200 की मिलियन की आबादी है पाकिस्तान की 6 टीमें पाकिस्तान में बन ही नहीं सकती और आपने पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को ऑन किया अभी आसिफ ने सवाल किया T10 लीग के हवाले से आपने कहा कि वाकई हमारी जो पॉलिसी है खासी कंफ्यूज है आपने T10 लीग में नहीं भेजा अबू धाबी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को और अभी इस हवाले से रिपोर्ट आई है ऑन द अदर साइड आप बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से टीमों को बुलाएंगे इंग्लैंड से टीमों को बुलाएंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट सर आपका तो इंग्लैंड से ताल्लुक है अभी वुमेन्स टीम जो है वो मलेशिया में खेल रही है और आपके आने के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक लाइन सी खिंचती जा रही है कोई आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है यूनुस खान ने आपकी दावत पर जो है वो नेशनल स्टेडियम आने से मना कर दिया देखिए कितनी सवाल पूछ रहे हैं एक मेन सवाल क्या है आपकी स्टेटमेंट ने तो दिया आपने लेकिन सवाल पूछें सर मैंने वही सवाल किए कि मैं भी एक ही सवाल करता क्योंकि यहाँ पर भी इसी तरह की कोई तकरीर होनी है तो मैंने भी बोला छोटी सी तकरीर कर लो आपकी मर्जी आप किस सवाल का जवाब देना चाहें अच्छा किसकी पता नहीं ये सवाल क्या है सवाल पूछे भाई स्टेटमेंट आपने दिया लेकिन सवाल नहीं पूछा सर पहला सवाल मेरा ये कि आप प्रोफेशनलिज्म की बात ठीक है कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड के आप चीफ एग्जीक्यूटिव जी जी से बैठे हैं कि कमर्शियल के बोर्ड के आगे हाँ बैठे हैं और आप इंग्लैंड से आपका ताल्लुक जी है इंग्लैंड से आए हैं और इंग्लैंड की जो खवातीन टीमें भी मलेशिया में खेल हाँ रही है पहले वो एक चीज़ बताता हूँ 7-8 महीने पहले इंग्लैंड ने बता दिया था हमें दैट दे नॉट कमिंग टू पाकिस्तान वुमेन्स टीम तो पहले ये तो अभी तो डिसीजन तो नहीं लेकिन पहले उनने डिसीजन बनाई थी मार्च में हमें ईमेल मिला था फ्रॉम द ECB टू से बैक इन मार्च दिसंबर में हम नहीं आएंगे तो देखिए सिंस देन वीव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस अराउंड दैट बट वो डिसीजन पहले उनने बना चुकी थी और दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपके T10 के हवाले से आपने कहा कि बोर्ड खुद बड़ा हाँ कंफ्यूज है तो आपने T10 में अबू धाबी में टीम को नहीं भेजा और आपने जो है वो कतर
क्या वहाँ पर इस तरह की मामला आ रहे हैं? हाँ देखिए वो कतर वाली जो मैंने पहले भी कहा आपको कि देयर इज़ नो डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन पहले जो हमने अबू धाबी में कंडीशनल एनओसी जो दी थे दे वर बेस्ड ऑन कंडीशंस एंड अगस्त में वो जो ऑर्गेनाइज़र है वो अबू धाबी वाला उसने ईमेल किया था हमें एंड ही आस्क्ड अस फॉर परमिशन, वी मेड इट क्लियर दैट स्टेज कि नन ऑफ आवर प्लेयर्स विल बी अवेलेबल टू प्ले इन इट। फिर वो डायरेक्टली एजेंट से थ्रू एजेंट्स थ्रू डायरेक्टली थ्रू प्लेयर्स उनने बात की है डायरेक्टली विद देम। सो हमने रिलक्टेंटली इशू कर दिया लेकिन दे वर कंडीशनल। So we decided to hold camps, fitness camps. We obviously, some of our players went to Australia, went around, so we called these guys back. लेकिन ये कतर वाली जो मामला अभी हो रहा है, in Qatar at the moment, as I said, there's no domestic cricket being played here. So it's free for guys to go and play. But लेकिन ये NOC policy जो हमारी है ना, we just got to have clarity on it. That's something that in the next couple of weeks, we will have clarity. Players के साथ हम बैठेंगे, we'll explain to players exactly what the NOC policy is. I will share it with you guys as well, so you're aware. Thank you very much कि आपने पेशेंस से जवाब दिया। यूनुस खान के हवाले से भी बताते हैं। यूनुस खान कि आपके और बोर्ड के दरमियान आप कोशिश कर रहे हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन अपने मुल्क में हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार नहीं है। यूनुस खान कराची में रहते हुए नहीं आ रहे। हाँ लेकिन देखिए पहली चीज़ ये है कि यूनुस खान is a legend of the game in Pakistan. I've actually got a good relationship with Yunus. But देखिए in terms of Yunus not coming, उनकी मर्जी है, he's decided not to come. Whatever grievances he has with the PCB, that's his personal thing. But लेकिन on the other side, हमारे पास, you know, we've got the Wasim Akrams of the world, we've got other players who do work with us, and some aren't going to be happy with जो who aren't working with the PCB as ex-players. Some are working, but देखिए हमारे लिए भी it's upsetting and it's disappointing that there's so many ex-players who have had history with the PCB and haven't had good experiences. But मेरा ये भी काम है कि, you know, I need to develop these relationships. I need to mend these relationships. Yunus Khan is a good friend. He's a legend of the game. He's a good human being. And people like Yunus, we need involved in Pakistan cricket. अभी आपने बात की कि अजहर अली को भी सिर्फ 2-3 मंथ हुए हैं, हमें उनको टाइम देना चाहिए। जवाब तलबी का एक मामला होता है, तो मिसबाहुल हक उनको 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिया है, तो क्या वो 3 साल के लिए सेफ हैं कि रिजल्ट जैसे भी आए 3 साल से पहले उनको नहीं हटाया जा सकता है? या अगर आप देखेंगे कि बर्डन जो है वो नहीं कैरी कर पा रहे, तो दोनों में से या तीनों में से, क्योंकि बैटिंग कोच के भी है वो, कोई एक ओहदा या 2 ओहदे उनसे वापस ले लिए जाए ताकि वो मोर फोकस हो सके। साथ ही बता दें कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी के कोचेस को क्या लीग टेस्ट उनके लेने जा रहे हैं? इतलात ये आ रही है कि जिस तरह आपने भी ऑस्ट्रेलिया के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जिक्र किया कि जो कोचेस हैं डोमेस्टिक के, उनकी उससे परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं, उनके टेस्ट दोबारा से लिए कि फिर अपॉइंटमेंट वगैरह। देखिए वो मिसबा की जो बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि नदीम खान भी काम कर रहा है मिसबा के साथ। सो बर्डन जो होता है, ही इज़ टेकन अ लॉट ऑफ द बर्डन ऑफ मिसबा। सो ये पहली चीज़ है, तो दैट्स गोना वर्क। दूसरी चीज़ है, ये मिसबा की 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं, हर स्टाफ मेंबर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनके अप्रेजल होती है हर साल के बाद। तो जैसे समी की होती है, मेरी होती है चेयरमैन के साथ, मिसबा की भी होगी। सो इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट प्रोग्रेस एंड एवरीथिंग एल्स, देखिए वी गॉट टू गिव मिसबा टाइम, उसको टाइम हम दें, बट लेकिन इट्स रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द डे। सो वो भी जज होगा रिजल्ट्स के ऊपर, तो वो भी खुद भी यही बात कह रहा है, तो मैं भी ये बात कह रहा हूँ आपको कि उसका अप्रेजल होगा, तो उसके बाद हम देखी जाएगी। We know we want to support him, we're backing him, he's our head coach, and we still believe he's the right man for the job. NCA coaches की थोड़ी ट्रेनिंग हम करेंगे, रीट्रेनिंग, because देखिए हाई परफॉर्मेंस की आप बात सही कह रहे हैं। In order to create high performance, you got to have high performance coaches. So इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, because at the moment there's still some very very good coaches and there's some not very good coaches working in our system. So ये पूरी retraining हमें करना पड़ेगा. We're going to have a new change clearly because Mudassar isn't going to continue because he's finishing his contract. Alizia has gone. So हमारे लिए ये opportunity होगा to revamp the whole of the NCA so that we can start moving in a different direction. Pakistan has an identity regarding cricket that we produce, you know, skillful cricketers in terms of, especially in terms of bowling, we have produced skillful players. So we are going towards professionalizing the
देखिए when you lose the likes of Amir and Wahab, it's not easy to replace overnight, particularly Muhammad Amir. So he made a decision, he's decided to move on, and you respect that, and he's made his decision. Professionalism की आप बात कर रहे हैं, देखिए natural talent जो है पाकिस्तान में, nothing changes. The talent will still coming through. लेकिन talent alone in professional sport now isn't enough. आप देख रहे हैं results भी हमारे आप देख रहे हैं. So ये चीज़ें जो है ना, the natural talent and players naturally coming through, like your Wasim Akrams and your Wakars came in years gone by, that will continue to happen. लेकिन ये एक system हम create कर रहे हैं कि उनको support करें and allow them to be the best that they can be, and that will take time. But the professionalism around the coaches, high performance, all of these things, we want the players to have the very best coaches working with them. So this is what one of our goals is. Okay, last 3 questions. One, Nadra, Esa. जी. Pakistan is going to tour England next year, so can we expect more players playing county cricket as you are associated with county cricket? वो पूरी कोशिश हम कर रहे हैं. We want to send the players early again to England. You know, a couple of players, Babar is potentially going to be playing for Somerset. Abbas Nottinghamshire के लिए खेलने के लिए वो जा रहा है. We're trying to get 1 or 2 of the batters, potentially at the moment speaking to counties to get them in. को उनको practice भी मिला है before the England series starts. It's going to be different conditions in England. They're going to face to Australia. So these things are going to take time, but we need to plan properly for England. It's going to be a very difficult series. But inshallah, we can hopefully have a few more players playing in England. वैसे तो सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, काफी देर से पूछना चाह रही थी, चांस मिला है तो उसी से रिलेटेड पूछना चाहूंगी जो याहिया ने किया T20 के हवाले से कि जिस तरह से एनओसी आप लोगों ने दे के वापस लिया, तो जो बोर्ड है वहाँ का वो भी काफी नाराज है आपसे, पीसीबी से, तो आया ये नाराजगी खत्म हो गई है या फिर मलेशिया में ही मैचेस होते रहेंगे? T20s वो ACB की बात कर रहे हैं? यूएई क्रिकेट के साथ. UAE क्रिकेट, अच्छा, क्योंकि आपने मलेशिया कहा तो अच्छा. UAE देखिए वो कॉरेस्पॉन्डेंस हमने की है UAE क्रिकेट के साथ. हमारी हिस्ट्री बहुत है. We've got a long history with them. We've worked very closely with UAE. Have been very good to us in over a long period of time. But I think the UAE now, I think correspondence जो हमने की है उनके साथ, everything is fine now, and hopefully it's not going to affect the relationship moving forward. Wasim Khan sir, we are always in cricket for wrong reasons. Match fixing, spot fixing, trouble is always there. जी जी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे स्टेप्स ले रहा है कि once for all इसके ऊपर कर्व किया जाए और जो भी लड़का इसमें is found guilty, he should be banned for life. Look, we are doing everything we can, to be honest with you, with this. देखिए anti-corruption issues that Pakistan has had, which have been well documented, doesn't help our credibility. It doesn't help us, particularly when we're trying to play against some of the top international teams. You know, in the past they've said, why should we play you? Because we don't know whether it's a real game or it's not a real game. So, हम पूरी हर चीज़ हम कर रहे हैं. We've got a good anti-corruption team now. हम ICC के साथ हम fully cooperate कर रहे हैं और we're working very closely with the ICC. And this is an issue for the whole game. And for Pakistan cricket, we're going to continue to have a zero tolerance now moving forward with this.